Okay, an object is called a projectile if it is thrown with some initial velocity in two dimensions at some angle. Actually, not in two dimensions. Initial velocity at some angle with the horizontal direction, and then allowed to move in two dimensions under the effect of gravity alone. So that is the definition of a projectile. Object is called a projectile if it is thrown with some initial velocity at some angle with the horizontal direction and then allowed to move in two dimensions under the effect of gravity. For example, a body, मान लीजिए हमारा एक ऑब्जेक्ट है, हमने या तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर दिया और फिर ये मूव करेगा अपने हिसाब से. मान लीजिए किसी हाइट से हमने इसको अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हमारा ग्राउंड है, तो यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को इस तरह थ्रो कर दिया. तो थ्रो करने के बाद इट इज फ्री टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. कैसे चलेगा ये? धीरे धीरे. तो ये इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल. इस तरह के ऑब्जेक्ट हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे. और दूसरा, मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को इस तरह सेंड कर दिया, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग सेंड कर दिया और थ्रो कर दिया, तो क्या करेगा ये? इसका पाथ ऐसे पहले ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आ जाएगा. तो ये जो एंगल है, इट इज मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो द कंडीशन इज thrown with some initial velocity at some angle with the horizontal direction. So there should be some angle with the horizontal direction, or it may be only in the horizontal direction. आप horizontal direction में throw करेंगे तो भी projectile कहेंगे. अगर वो कोई एंगल बना रहा है horizontal direction से तो भी हम उस ऑब्जेक्ट को projectile कहेंगे. एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हमने उसको vertical send कर दिया, making 90 degree with the horizontal direction, then it is not a projectile. तो अगर हमने उसको vertically upwards हमने उसको थ्रो कर दिया तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा. लेकिन अगर वो कुछ भी एंगल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बना रहा है तो हम उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल. अगर वो 90 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, देन वी विल नॉट कॉल दिस ए प्रोजेक्टाइल. सो एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल आर ए बुलेट fired from a gun, or a stone thrown from the window of a moving bus or standing bus, and athletes when they throw javelin, etc. That also is called a projectile. Hammer or javelin thrown by an
athlete is also called a projectile. So these are the, so how does a projectile move? Find effect of two velocities. There are two, a uniform horizontal. Okay, so this velocity will not change if there is no air resistance. तो मतलब इसलिए वो यूनिफॉर्म रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो, अगर हम रेजिस्टेंस को अकाउंट में नहीं लेते हैं. और सेकंड वेलोसिटी है ए यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, एंड अनदर वन इज ए यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी. That means the velocity which is changing uniformly. That means the acceleration is constant. A uniformly changing velocity in the vertical direction. So the change can be increase or decrease. Whether the velocity is increasing or decreasing, it will be changing uniformly and in the vertical direction due to gravity, because as I said, under a constant acceleration which is gravity. तो अभी हमने जो डिस्कस किया था एग्जांपल, उसको फिर से लेते हैं. हमने मान लीजिए इस डायरेक्शन में मेकिंग सम एंगल थीटा ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया. सो इफ दिस इज द वेलोसिटी, then we can get two components of these velocities. So one will be along the horizontal direction, another one will be along the vertical direction. तो एक हमने बोला ये this velocity along the horizontal direction से VH, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो यूनिफॉर्म रहती है, जो चेंज नहीं होती अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो. तो एक इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे इसका होता है, और दूसरा इफेक्ट ये वर्टिकल वेलोसिटी का होता है जो यूनिफॉर्मली चेंज होती है. जैसे जैसे चलते हैं इसकी वेलोसिटी अगर ऊपर जा रही है तो डिक्रीज होती जाएगी यूनिफॉर्मली, और ऑब्जेक्ट हमारा नीचे आ रहा है तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती जाएगी वेलोसिटी. तो ये दो वेलोसिटीज हैं जिसके इफेक्ट में ये ऑब्जेक्ट जो हमारा मूव करता है. तो पहले ये ऊपर जाता है, फिर ये टॉप मोस्ट पोजीशन पहुंच के फिर नीचे आता है. तो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज करती है और यूनिफॉर्मली वेलोसिटी डिक्रीज करती है. तो वो तो होगी वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट. और ये फिर फॉरवर्ड भी जा रहा है, तो ये जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, आगे फॉरवर्ड कर रहा है, वो वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, विच इज इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो अगर हम एयर रेजिस्टेंस ना लें तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी. That means acceleration in this case will be zero and acceleration in this case will be constant. So these are the two velocities under the effect of which the projectile moves in two dimensions. Now let us, before we discuss the motion of the projectile, there are some assumptions. So some assumptions that we should keep in mind. Number one is no air friction. We do not consider air friction. अगर एयर फ्रिक्शन है तो हम उसको, जब हम स्टडी करेंगे मोशन को, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे. यू डिसरिगार्ड एनी एयर फ्रिक्शन. ओके, एंड the because earth is also rotating about an axis, and also there is curvature of the earth, so these two effects also are disregarded. हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ और कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है वो नेग्लिजिबल है, उसका इफेक्ट जो है प्रोजेक्टाइल पे नेग्लिजिबल है. दैट आल्सो वी कंसीडर नेग्लिजिबल. एंड थर्ड इज द एक्सेलरेशन. कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट. तो जब प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है तो हम कहते हैं कि जब मोशन के दौरान दी डायरेक्शन मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन उस पे लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, उस प्रोजेक्टाइल पे, हम उसको कांस्टेंट मान के ही इस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे. हम ये नहीं कहेंगे कि उसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो चेंज हो रहा है, हम कहेंगे वो कांस्टेंट है. तो दीज आर द अजम्पशंस दैट वी रिगार्ड while studying the motion of a projectile. Projectile.
So very quickly, once again, motion along horizontal direction, x equal to x naught plus uxt plus half ax t square. And we know ux, that is velocity initial in the x direction, is u, that is initial given velocity. Acceleration in the horizontal direction is 0 and initial position is 0. So putting these values, we get x equal to ut, which is, that means t is equal to x by u. Now this we get after considering the motion of the projectile in the horizontal direction. Now let us consider the motion of projectile in the vertical direction. So final position y in the vertical direction is equal to initial position plus uyt, that is initial velocity multiplied by time in the vertical direction, and half ayt square. Ay is the acceleration in the vertical direction and t is the time. We know vy, y0 is 0, uy, that is initial velocity in the vertical direction, is 0. We already have discussed that. And acceleration in the vertical direction is plus g, because g is acting downward direction in the same direction in which velocity is increasing. So putting all these values, we get y is equal to half gt square. So put the value of t from here. Y will be equal to half g x upon u whole square. Make rearrangement, y will be equal to half g upon u square into x square. So this quantity is constant, g is constant, u is also constant. So y is equal to kx square. Now this equation represents graphically a parabola which is symmetrical about y-axis. So the path of the projectile, which is given horizontal velocity only, or which is thrown with horizontal velocity u, is a parabolic path. Time of flight of the projectile, that means how much time it will remain in the air before it strikes the ground. So let us say t is the time of flight, capital T, and let us say from O it strikes the ground at position say C. Okay, now let us, because C is vertically, uh, that means the projectile has come from point O vertically downward to level of point C. So therefore we are going to consider vertically downward motion of the projectile. Now considering this, y0, that is the initial position of the projectile in the vertical direction, is 0. Y0 is 0, that is initial position. Let us say the height of the point of projection and the ground level is h. That is the distance, vertical distance between point O and C level, ground level is h. So y will be equal to h. तो ग्राउंड से वो h पोजीशन पे है. And uy, that is the initial velocity in the y direction, we already know is 0. Acceleration in the y direction is g, and time is equal to capital time t, because we have assumed that the time of flight is equal to capital T. Okay, so use equation y is equal to y naught plus uyt plus half ayt square. So put the value 0, uyt is 0 into t, t here is capital T, plus half into g into capital T square. So this is 0, this is 0, so and y is equal to h. So h will become equal to, if height is known of the point from the ground level, will be equal to half g capital T square. So we want to find out the time taken to
for the projectile to move through a vertical distance h. So t square will be equal to twice h divided by g. So t will be equal to twice h divided by g under root. So that is the time taken by the projectile to fall to a ground level through a height h, through a vertical distance h. Now let us find out the horizontal range. Suppose this point is B, above which there is a point O. Now this distance between B and C is called horizontal range. It is a horizontal distance covered by the object while going from O to C. O से C जाने में horizontal distance कितना travel किया, उसको हम बोलते हैं horizontal range. ये BC के बराबर होगा. ठीक है, तो हम अब डिस्कस करेंगे motion of the projectile in the horizontal direction. So horizontal range. Represented by capital R. So we shall discuss the motion of the projectile in the horizontal direction. So in the horizontal direction, initial position is 0, x0, and initial velocity ux is u. Acceleration in the horizontal direction ax is 0, and the time taken by the projectile to reach the point C is capital T, which we have already found. So therefore, using equation, final position x is equal to x0 plus uxt plus half axt square. So ux is 0 and ux is u and t capital plus half ax is 0 and t square. So this will be 0, this is 0. So what we get is u into t. Now what is the value of t from here? U into under root 2h divided by g, and this is r because x is the distance. The final position is at distance r, horizontal range from the initial position. So r is equal to u under root h. So u under root 2h divided by g. So that is the value of r. So here h is known, g is known, u is known. We can find out the horizontal range, that is how much the projectile will move in the horizontal direction. Now finally let us find out the velocity of projectile at any instant. तो अगर प्रोजेक्टाइल हमारा मान लीजिए ये प्रोजेक्टाइल हमने चला दिया, अब हम जानते हैं इसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है. अब यहाँ सपोज पॉइंट P पे इसमें दो वेलोसिटीज हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो इसको फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ा रही है और एक जो इसको नीचे ला रही है, दैट इज वर्टिकल वेलोसिटी. सो देयर आर टू वेलोसिटी व्हिच आर एक्टिंग एट पॉइंट P at time t. Now let us find out the velocity of the projectile at point P, because velocity will be different at different positions at different times. So velocity of the projectile at any given instant. Velocity of the projectile at any instant of time. Now इसमें कौन कौन सी velocities हैं? The object is moving at any time t. It has two velocities which are perpendicular to each other. So one is a velocity in the horizontal direction, let us say along PA,
another velocity in the vertical direction, that is along PB. तो ये वेलोसिटी इसको आगे ले जा रही है, ये वेलोसिटी इसको नीचे लेके आ रही है. तो we can find out the final velocity at point. And now PA, the velocity in the horizontal direction, PA will be equal to U, because हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, तो ये तो U के बराबर है. और द वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन PB, let us say it is Vy, that is the final velocity in the y direction. Now let us find out the velocity Vy at time t. So we can find out the final velocity by using relation Vy is equal to Uy plus Ayt, that is V is equal to U plus At. So final velocity in the vertical y direction is equal to initial velocity in the y direction plus acceleration in the y direction multiplied by time t. So putting the values, Uy, that is the initial velocity in the vertical direction, is 0, and acceleration is positive g, and time is t. So is equal to gt. So Vy is equal to gt. Okay, and Ux, Vx